देखिए रमेश जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय और साचे दरबार की जोर से बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी प्रेम से बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी आगे जय माता दी जय माता दी बस बस और साचे दरबार की ओम साचे नीचे साचे दरबार की जय आओ बेटा बैठो आगे करिए भाई तीन सरकार दे पड़ता है जय माता की जय मां बनभूमि वाली मां भ्रामरी धाम में पहुंचने पर आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तजन कृपया ध्यान दें। मां भ्रामरी दरबार में कुछ ही समय बाद कन्या पूजन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि इस पावन क्षण का, पावन पल का आनंद लें और सभी भक्तों से एक जरूरी जो सूचना है वो ध्यान दें। इस दौरान कोई भी भजन जयकारा ना लगाएं। इस दौरान कोई भी भजन जयकारा ना लगाएं। शांति से हाथ जोड़ करके जय माता की का जाप करते रहें। और जितने भी सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर, जितने भी साथी यहाँ विराजमान हैं, खड़े हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है आप भी शांति व्यवस्था बनाए रखें। शोर शराबा हाहुल्ला बिल्कुल भी ना करें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। पुनः सभी ध्यान दें, सभी यात्री, सभी सेवादार, सभी सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर ध्यान दें। कोई भी शोर शराबा ना करें। हर एक गेट के सामने आप खाली रखें और जितने भी यात्री, जितने भी श्रद्धालु
माँ भ्रामरी दरबार में आए हैं। माँ ब्रह्मभूरी देवी, माँ भ्रामरी देवी शक्तिपीठ ब्रह्मभूरी धाम ट्रस्ट एवं समस्त पुजारी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, आपका हार्दिक स्वागत करता है। माँ भ्रामरी आप सभी की शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करें। सदैव आपके घर में सुख समृद्धि माँ भ्रामरी की दया से बनी रहे। पुनः आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कोई भी जयकारा ना लगाएं, शांति से इस क्षण का आनंद लें। बड़े नसीब वाले होते हैं जिसको ये क्षण महामारी देती है। आइए आनंद लेते हैं परम कन्या पूजन का। हरि ओम कवचंडी कवचम नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। अविघ्नमस्तु। ओम नारायणाय नमः। ओम नराय नरोत्तमाय नमः। ओम सरस्वती देव्यै नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः चामुण्डा देवता अन्धन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सर्वे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच ओम यद्वैगं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमो विप्रो सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमो शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमो स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमो सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्य शस्त्रमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे त्वैव भजार्ता शरणं गताः। जायते किञ्चिदशुभौ रणसङ्कटे नापदन्तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि जयस्तुवत्या स्मृतानो नन्देषां सिद्धिप्रजायते। वैतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रियगतसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् केटकं दोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानि देवानां चरिताय वै। महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी राहिमां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी राज्यां रक्षतु मामैत्री आग्नेया महति देवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षकौवेदी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेत् ततस्ताद् वैष्णवी तथा हेमन्तशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे अगर्दस्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः अर्जिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षेतु मां मूर्तिव्यवस्थिता
मालाधरीर्लाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी नेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके अर्किनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले कुशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये चण्डिका घण्टिकाञ्चित्घण्टा च महामाया च तारुणे कामाक्षी चिमुखं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे तदुरकरी नीलग्रीवा बहिष्कण्ठे नलिकान्मलकूपरी खड्गधारिण्यभौ स्कन्धौ बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चामुलीस्तथा नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेद्गदेश्वरी तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षेज्जानुनी विद्यवासिनी भूतनाथा च मेढ्रं मे भूलू महिषवाहिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी कुल्पयोर्नारसिंही च पादौ चाभिततेजसी पादाङ्गुले श्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तनवासिनी नखान्दंष्ट्राः कराली च केशां शैवोत्पकेशिनी लोमकूपे सुतौ वेदीत्पुरं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जामसामांसान्यस्तिमेधांसि पार्वती अन्तराणि कालरात्रिश्च वित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अथेत्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्ध्यौ रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापादौ तथा व्यादौ समानो दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं प्रियत्स्थानौ ललितं कवचेदतु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत् यदीक्षेत् शुभमात्मनः कवचेनावतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यय्यं कामयते कामं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये त्वमवेत्पूजा कवचेनामृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं विसञ्जोषत्रयान्वितः दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये विपराजितः जीवेत् वर्षजितौ साकरं तपमृत्युविवर्जितः नश्यन्दिव्यादयः सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमो वापि कृत्रिमञ्चाप्यनिमिषम् आभिचाराणि सर्वाणि यन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराख्ये जलाशयो जलजाश्चोपदेशिकाः सहजाः फलजामाला शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षजलाघोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृत्तिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलपदकाननम् तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमौ स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसारितः वाराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देव्याः कवचम् अथ अर्गलास्तोत्रम् अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये जपे विनियोगः।
ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते मधुकैटपवित्रा विविधात्मवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुरनिर्णाशो विधात्मवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि वन्दितां युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि रक्तबीजपथे देहि लग्नं दलिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि अचिन्त्यरूपजहिते सर्वशत्रुविनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ततेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्ति भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परौ सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतान्नाशं विधेहि फलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमावश्यम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं धनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पगणे चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रसंस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या त्वमम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिभृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपतिसदभावपूजिते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्। मार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रम् अथ कीलकम्। अस्य श्रीकीलकस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थकारिणे सर्वमेतत् विनायस्तु मन्त्राणामपि कीलकम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सत्सञ्जाभ्यतत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवता नित्यं स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो न उषसन्तन्त्रो न किञ्चिदपि विद्यते विनादाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्। समकराण्यपि सिद्धन्ति लोकशङ्कामिमावरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव इदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तायथा वन्यन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः कदाचित् प्रतिगृह्णाति प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति सुस्फुटम्। प्रसिद्धस्य गणस्तोऽपि गन्धर्वो जायते वने न च यवाप्यकृतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते। नापमृत्युपशय्याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत इह कुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारब्धते बुधैः।
सौभाग्यादितयद्विन्ति दृश्यते नरनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन चाप्यविनौ शुभम् शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यतैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षस्तूयते साधकिञ्जनैः भगवत्याः कीलकस्तोत्रम् अधध्यानम् खड्गं च करगदेषु चापपरिघाच्छूलं वशुण्डीं शिरः शङ्खौ सन्धरतीङ्करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् वेदाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत्सपिते हरौ कमलजो हन्तुं मघुं कैटभम् अक्षस्रक्परशोगदेषु पुरिशम्बरमन्धरः पुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रमाणप्रभाम् सेवे सैरिभवरजनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् घण्टाशूलहदानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीङ्घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् गौरी देहसमुद्भवान् त्रिजगताम् आधारभूताम् महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् विद्युत्तामसमप्रभाम् मृगपतिस्तन्तस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रधारिखेटविशिकांश्चापङ्गुणन्दरजनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनः कथ्यतेष्टमः निशामयतदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मनमन्दराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोजुषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सुतैरुद्धे कोलाविध्वंसिनिर्जितः ततस्व परमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तस्य महाभागस्य प्रबलारिभिः अमात्यैरपरिविर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशोपदं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन ऋतस्वाम्यस्य भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम् स तत्राश्रमभद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च पितरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं विदत् मद्भृत्यैस्तैरसदवृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशय्यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेत्य कुर्वन्त्यन्यमयीभृताम् असम्यक् व्यशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितस्सूतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास वासिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैषमेकन्ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भोहेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वन्दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतो वैश्यः प्रश्रयावरतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्विहस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च पुनैर्राधे पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखे नरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहन्नवेद्विपुत्राणां कुशलास्तिकाम्
प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्रसंस्थितः किन्नुतेषां गृहे क्षेमं किन्नुसामृतम् कथन्ते किन्नु सतवृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवाल्लुब्धैः पुत्रदाराधिकेतनैः तेषु किं भवत स्नेहमनमत्थातिमानसम् वैश्योवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मर्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धननुग्धैर्निराकृतः प्रतिस्मजनः सोहार्जितेष्वेव मे मनः विवेदन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्रेव प्रवणं चित्तं विगुणेषु विबन्धितो तेषां कृते मे विश्वासो दौर्बलस्यन्ति जायते करोमि कीयन्नमनस्तेष्वप्रीतिविनुष्फलम् मार्कण्डेय उवाच तदस्तौ सहितौ विप्रतौ मुनिौ समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वाक्तौ यथा न्यायं निहारहन्तेन संहितम् उपविष्टौ तथा काश्चिच्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवं स्वामहं वृष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्वतत दुःखाय मे मनसस्वचित्ताय कृतां विना महत्वङ्गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य विवेतनमुनिसत्तम स्वजनकृतपुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्ततोज्झितः स्वजनेन तु सन्तप्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमे शरताहं च युवापत्यत्यन्तरुक्षिरौ दुष्टदोषे विषये मन्त्वा पृष्टमानसौ सत्यमेतरमहाभागो यनमोहो ज्ञानिनोरपि महाश्रितभवत्येषा विवेकान्तस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभागो यान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्रात्राबन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानन्ति मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् छावचञ्चुषु प्रणमोक्षाकृतान्मोहात् पीड्यमानानपेक्षुषा मानुषामृजौषाख्योऽसामिनाशा सतान् प्रति लोभात् प्रतिबलाराय धनवेतान् किं न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्राजगत्पतेः महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहायो महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन्काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च जिन्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वो श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वद ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेऽपि तथा लोके सा नित्या त्रिभिर्जीवते योगिनिग्रायुधा विष्णुर्जगत्येकानवीकृते आस्तीर्यशेषमहजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सदापि विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसरौ चोकरौ प्रसुप्तं जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं श्रीसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरसुरां तेजसः प्रभुः
ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हिमषट्कारस्वरात्मिका सुधात्मक्षरे नित्ये स्थिता मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा त्वयैतत्थाल्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते सर्वदा सृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं सृष्टिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्पञ्चसर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्चदारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा सत्या पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिरिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागतिनी चक्रिणी तथा अञ्जिनी चापिनी बाणभुषण्डी परिभारिता सौम्या सौम्यतरा शेषसौम्येकस्तुतिसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्चकिञ्चिन्मचिदवस्तु सदवाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं यसे मया यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पाद्यप्रियो जगत् सोऽपि निद्रावसङ्गीतास्तस्मांस्तु महेश्वरः शरीरग्रहणमहमीशान एव च कालिदास्ते दोतस्मान् वस्तु शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैस्मैरुदारयते संस्तुता मोहयैत उदराधर्षा वसुरौ मधुकैटमौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतोलभो बोधश्चक्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेत्यस्ततो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो त्यक्तजनमनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः सददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणन्दितोद्यमौ समुत्थाय त्वस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिपलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वनोस्मत्तो प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्यमे तुष्टौ मम वध्या उवावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्वृतं मया ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामपि तथा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षणः आवान्यसमयत्रोर्मे सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच अथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचकरगदावृता उत्तमाचक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्कृता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयश्वरवदाभिते श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवी महात्म्ये प्रथमः ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमूर्तिस्थं पूर्णमुद्रितं पुनः महिषेऽसुराणामधिपे देवाराज्यपुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं चित्त्वा च सकलान् देवान् निशासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मलोचनं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तुलक्षणौ तथा वस्तुतस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं दशाः कथयामासुरदेवापि भवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निरेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गाङ्गाः सर्वे देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनः एतदवः कथितं सर्वमरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोतौ शम्भुष्टभ्रुमुखे कुटिलादनौ ततोऽधिको पूर्णस्य चक्रिणो वदना